ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରିବ ଘରେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ପ୍ରୁଭ୍ ଦାଟ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଓବେଜ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି, ପ୍ରୁଭ୍ ଦାଟ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଓବେଜ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ, ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ରହିଲା Q1, ଏଠି ରହିଲା ଚାର୍ଜ Q2, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେସନ୍ ମନେକର R ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଏଇଠି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ F12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ F21. F12 means force on first body due to the second one, and F21 means force on second body due to the first one. So F12 has equal magnitude as that of F21, but their direction is totally opposite. This is based upon the fact that R12 vector equal to minus of R21 vector. You first try this. ଯଦି ଏଇଟା ହେବନି ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆନ୍ସରଟା। ଦେନ୍ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ ଏଇଟା ପଢ଼େ, ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ ପଢ଼େ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଚାର୍ଜ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା, ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଚାର୍ଜର ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟଟା, यार मैग्नीट्यूड भी अच्छी किंतु डायरेक्शन भी अच्छी किंतु तथापि एटा गोटे स्केलर। या रीजनटा होची जे स्केलर जे वेक्टर खाली हम कहि दे परिबानी जनकर डायरेक्शन अच्छी मैग्नीट्यूड अच्छी ताको वेक्टर ता नु वेक्टर हा पय हेले ताको वेक्टर एडिशन रूल को मध्ये मानिया पड़ो। तो मनकर गोटे चिंता करी एपटे गोटे 3 कूलम चार्ज फ्लो करुच्ची, एपटे गोटे 5 कूलम चार्ज फ्लो करुच्ची, ताले एपटे टोटल चार्ज हम 8 कूलम। ताले 8 कूलम चार्जटा एटा 3 कूलम 5 कूलम है समेशनटा 8 कूलम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम। एटा एंगलटा 30 डिग्री हेले भी से 8 कूलम हो, एटा 30 डिग्री हेले भी 45 डिग्री हेले भी 8 कूलम हो, 90 डिग्री हेले भी 8 कूलम हो। कारण आमर जो फॉर्मूला थिला रिजल्टेंट इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2ab cos theta root over. It is clearly shown that r depends upon theta, but here the resultant charge or resultant current, it does not depend upon the theta. So though it has direction and magnitude, still then it is not a vector quantity because it does not obey the basic rule of vector addition. Then we will study discrete nature of charge. What is discrete nature of charge? In earlier time, the scientists thought that the charges are uniformly distributed in a body. Charge गुड़ा uniformly distributed होगी गोटे बॉडी रे अछि। किंतु वर्तमान रे जब एक्सपेरिमेंट डेवलप हैला, नुआ नुआ एक्सपेरिमेंट कराला, तो जानले चार्ज गुड़ा डिस्क्रीट बा सेपरेट नेचर बोली कहा जाए, से माने सेपरेट होइकी भी रहि पारे। मन गोटे कथा कहूची, एटा गोटे रड अछि, ए रडर लेंथ होची हमर 10 सेंटीमीटर आ टोटल चार्ज अछि हमर 10 कूलम। 10 कूलम चार्जटा 10 सेंटीमीटर लेंथ रे डिस्ट्रीब्यूट होईची। जदि एटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होइकी रहे, ताहले आमे कहि परिबा जे यार लिनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू 10/10, दैट इज 1 कूलम पर सेंटीमीटर। 1 कूलम पर सेंटीमीटर माने ईच सेंटीमीटर रे यार चार्ज अछि केते 1 कूलम। जे एटा नेसेसरी नुह जे चार्जटा सदा बेले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होइकी रहइबो। गोटे बॉडी रे गोटे चार्जटे सेपरेटली मध्ये रहि पारे। मनकर ए बॉडी रे 10 कूलम चार्ज अछि, से एठी अक्युमुलेट हे पारे 5 कूलम, एठी अक्युमुलेट हे पारे 3 कूलम, एठी अक्युमुलेट हे पारे मध्ये 2 कूलम। So this is the discrete nature of charge. It is the property of a charge. It can either uniformly distributed over a surface or it can be separately distributed over a surface by accumulating in one place and not present in other place. This nature is also called quantization of charge. Discrete nature of charge is also called quantization. Quantity ru quantization is. Quantization of charge means charge cannot have any magnitude. It has to contain a specific magnitude of charge that is decided by a relation q equal to plus or minus any. The basic charge is the charge of electron, that is E, and the charge must be integral multiple of E, where n is the integer, that is 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 4, etc. So it may be plus charge, it may be minus charge, that does not matter, but the amount of charge, the magnitude of charge must be an integral multiple of E. E is the basic charge, that is the charge of electron, whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is all about discrete nature of charge. Then coming to conservation of charge. Conservation of charge, we know that conservation of energy, total energy remains constant. Only it can be converted from one form of energy to another form of energy.
Just like the total charge means summation of positive and negative charge inside a body is constant. It is constant, always remains constant. That is called conservation of charge. Then additive nature. Additive nature, it comes from addition. Addition to additive. Let a large body, here charge is q1, here charge is q2, here charge is q3, here charge is q4. The total charge in a body we can say q1 plus q2 plus q3 plus q4. That is, the total charge of a body is the addition of all charges present separately in the body wherever it may be. That is, the total summation by total samosti amku dabo total charge. That is called additive nature of charge. Then invariance of charge. Invariance of charge means vary माने चेंज होगा. इनभ्यारी प्रिफिक्स लगी, इट इज ए नेगेटिव प्रिफिक्स. इनभ्यारेंस माने चेंज न होगा. चार्ज प्रॉपर्टी निजर परिमाणटा को मैग्नेट्यूड को से चेंज करबनी. और चार्ज परिमाण सदा कांस्टेंट थाए, तो एठी मापिले भी से कांस्टेंट रहबो, तो चंद्र रे मापिले भी सेटा कांस्टेंट रहबो. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉर्मली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हला, इफ यू ट्रांसफर योर चार्ज फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. थैंक यू.